हेलो एवरीवन। आज हमारा डे 4 और 5 का अपडेट है। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला था, मैं मोरल थिंकर्स इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों कंप्लीट कर लूँगा। बट ये बोलना तो बहुत आसान था, लेकिन इसे कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज को रेफ़र करना पड़ गया। बिकॉज़ इसी चीज़ के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ, जो मैंने पहले बोला था कि मैं स्प्रिंग बोर्ड की बुकलेट को फॉलो करूँगा। लेकिन अभी जैसा देख के मुझे पता चल रहा है, स्प्रिंग बोर्ड की जो बुकलेट है वो बहुत ही इनसफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ मटेरियल। क्योंकि जैसा कि पेपर का पैटर्न भी हम देख रहे हैं, और हमें जो समझ आ रहा है कि आरपीएससी जो है वो धीरे धीरे यूपीएससी पैटर्न की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। मतलब यूपीएससी पैटर्न क्या होता है कि, कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी पैटर्न यानी मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ उनका फोकस अब जाता जा रहा है। और थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें और वो जो हैं वो कम पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल चीज़ें बिल्कुल ही रिलेवेंट हो जाएंगी या फैक्ट्स को वो बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, पूछेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और एथिक्स जैसा जो टॉपिक है, इसके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही मुझे लगता है कि जो बहुत मेन है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक, पूरा सब्जेक्ट ही एकदम सब्जेक्टिव है। उसके अंदर अगर आप फैक्ट्स और उसको याद रख के अगर एग्ज़ाम में जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर पाओगे, until unless you have the conceptual clarity। और जैसा मैंने देखा ड्यूरिंग, जब मैं अभी अपने जो 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर रहा था, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है, जैसे गांधीयन एथिक्स का टॉपिक जब मैंने कवर किया, तो गांधीयन एथिक्स के अंदर, इसके अंदर गांधीयन फिलॉसफी के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। तो इट इज़ वेरी हार्ड टू डिराइव the fact that what could be the ethical point of view from that philosophical point of view। तो अगर आपने गांधीयन एथिक्स पहले नहीं पढ़ी हुई है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्प्रिंग बोर्ड की बुक से उसे समझ पाना पूरी तरह से। इसी तरह से सेम जो चीज़ है मेरे को दिखाई दी, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में, वेस्टर्न एथिक्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर आपको एक फिर भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि अलग अलग जो टाइप्स ऑफ थियोरीज हैं जिसके बारे में वेस्टर्न फिलोसफर्स बात करते हैं, जैसे कि हम उस थ्योरी को समझ सकते हैं, जैसे कि हम माने, अगर मार्क्सिस्ट, अगर एथिक्स की बात करें तो मार्क्सिस्ट एथिक्स को समझा जा सकता है मार्क्सिस्ट फिलोसफी को समझ करके। तो आप डिराइव कर सकते हो कि व्हाट कुड बी द वैल्यूज़ जिसको मार्क्सिस्ट एथिक्स के अंदर प्रमोट किया जाता है, जिसको वैल्यू दी जाती है। सिमिलरली इन फेमिनिस्ट एथिक्स, तो उसे आप इस बुक से इजीली समझ सकते हो। लेकिन उसके बाद कुछ जो डेटा है, वो रिलेवेंट डेटा आपको मॉडर्न टाइम में अपनी रिलेवेंस शो करने के लिए अलग से ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने फेमिनिस्ट एथिक्स के बारे में कुछ डेटा जो है वो सर्च करके नेट से, और वो थोड़ा मैंने ऐड किया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जस्ट अ सेकेंड। सो ये डेटा है थोड़ा फेमिनिज्म के ऊपर जो मैंने अलग से ऐड ऑन किया है। अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो एक सेकेंड को। सो फॉर एग्जांपल, जब हम फेमिनिस्ट एथिक्स पढ़ते हैं स्प्रिंग बोर्ड से, तो वहाँ पे हमें डेफिनेशन में दिया हुआ है कि feminist ethics talks about all the things which the current ethics has a problem। उनका कहना है कि the current ethics is defined by the male society or the male state। So everything that happens in the ethics that is defined by the male society are mostly deals with the public sphere of life and not with the private sphere of life, and most of the exploitation of women happens at the private level। So उनका एक argument है कि there should be no difference between public and private, and this is just an example to understand the feminist ethics and their point of view।
So they propound for female oriented और female prioritized values जिनको सोसाइटी में प्रमोट करना चाहिए. तो हाँ, ये मैंने एक एग्जांपल बताया कि जिस कैसे फेमिनिस्ट एथिक्स के बारे में जो बुक में लिखा हुआ है वो कैसे सफिशिएंट नहीं है. तो उसको समझने के लिए आप एक डेफिनेशन वाइज उसे समझ सकते हो बुक से, लेकिन उसके ऊपर अगर आप एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हो तो आपको एक थोड़ा डेटा जो है उसकी अंडर बेसिक अंडरस्टैंडिंग और क्लियर करने के लिए समझना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेमिनिस्ट एथिक्स टॉक्स अबाउट द एथिक्स ऑफ केयर. सो मतलब उनका कहना है कि एथिक्स ऑफ केयर डील्स विद not just caring in its literal sense but also in a whole developmental way. जैसे कि हम समझ सकते हैं कि उनका कहना है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो है वो वैल्यू करती है मैस्कुलाइन वैल्यूज़ को, जैसे कि इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, इंटेलेक्ट, विल, वेरीनेस, हायरार्की, डोमिनेशन, समथिंग लाइक दैट. एंड इट completely ignores the feminine values because feminists live in private spaces क्योंकि as per societal rules defined by the masculine society, तो private life को they are completely ignoring, but private life itself is a very big factor in the life of women and also in the life of men or life in general. सो उनके लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंटरडिपेंडेंस विद द फैमिली, with their spouses, with their husband, sons, their brothers, their fathers. So they live in interdependence, they live in a community, they live with connections. So the values of sharing, emotion, trust, absence of hierarchy, living with the nature, process, joy, peace. So ये सब these kind of values are more important to or given more importance in the feminist ethics because they are trying to give a message that the world itself, which they are valuing itself, the world itself, what it values is not in whole sufficient because अगर आप इसको पढ़ेंगे हैं जब आपको तब आपको ये भी एक आइडिया लगेगा कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हैं वो अचीव करने के लिए वैल्यूज़ आर ऑलवेज changing or they are dynamic in nature. So values are always evolving, and in a society where we are living with the male ethics, uh, there is a need in the society to change it to female ethics because कि जो बहुत सारे ill practices हैं that have generated because of dominance of male ethics. सो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक एग्जांपल के साथ कि वाई ह्यूमन एथिक्स आर क्रूशियल फॉर इंडिया और फॉर द सोसाइटी इन जनरल बट स्पेशली इन केस ऑफ इंडिया. सो वी कैन सी दैट एनसीआरबी का जो डेटा है 2019 का उसके अकॉर्डिंग देयर आर 87 रेप केसेस डेली इन इंडिया and 4 lakh cases in the year 2019 have been reported against women in India. Or we can say that 40% of the graduates of STEM, yani science, technology, engineering, mathematics, are women, but only 14% are scientists, engineers in India are women. Why this happens? Because most of the times they give up their career, their studies, or the higher studies they are supposed to go due to their marriage, pressure by their parents or their family, or by the economic dependence on someone, or their husband, their father, their maybe their sons, or maybe anybody else. So there is also a challenging misogynist mindset of the people in India and the people's representatives. का एक example हम देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव gave this statement against a capital punishment which was suggested for rape. He said लड़के हैं गलती हो जाती है. So this kind of mindset जो है it is a challenge and that's what the feminine ethics, feminist ethics is trying to cater to. So this is just an example, and to understand the other types of ethics, if you want to study teleological teleological point of view of ethics, so you can very well definitely understand it if you understand the teleological. What is teleological point of view? What is utilitarianism?
what as the consequence based ethics. So springboard में ये चीज़ आपको थोड़ा अच्छे से समझ तो आ जाएगी, लेकिन still you have to add on some examples to it, some real life relevant scenarios in modern times which are more relevant. So you have to add on to those examples also. You can find those examples on net very well, मतलब easily मिल जाएगा, so कोई problem नहीं है. Same thing with the deontological, but in deontological there is most of the ethics which we know today is mostly deontological, because it is based on duty or it is based on virtues or um, so basically, so deontological ethics जो है, ethics is supposed to be deontological in nowadays. That is what I think. I mean, it's my point of view, but most of the ethics that today we study, and it is supposed to be how it is supposed to be, it's deontological because it gives so much importance to the duties, and it comes in align with the Indian state or Indian philosophy or the Indian thinkers philosophy, because they give too much importance to the duty, and so does the Mahatma Gandhi and Bhagavad Gita. They give too much importance to deontological or the value of the importance of duties and following the duty and duty for the sake of duty. So deontological ethics is much more given emphasis, so you will find more suitable examples, and at the same time this feature of deontological ethics also makes it important topic and a favorite topic of the examiner to give questions upon, because it can be related to so many examples in the modern life. So deontological ethics, you need to study it conceptually and really, you know, with in depth. So next thing that there are also other kinds of philosophies given in the book, but I don't think they are much more important, because they more deal with the philosophy itself and not with the ethics related to this philosophy. So if you want to derive a conclusion that what kind of ethics that philosophy, that ideology has reached, you have to make sense of it, and by understanding conceptually that theory, uh, very well get a good sense of it. So I think you have to study somewhat from the book, but keep yourself restricted to the structure of the syllabus from the book, and for the examples or for the understanding to go for uh, some external research and study it from internet and other topics. So that would be better, and for your understanding and for to get marks. So बिकॉज जैसे जैसे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो यूपीएससी टाइप पेपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, तो दिस वुड बी रियली हेल्पफुल इफ यू आर prepared in advance. So this was today's update, and so far I have completed the topics of ethics and human values and lessons from the lives and teachings of great leaders. Actually स्प्रिंग बोर्ड में ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है अदर देन moral thinkers and philosophers, because उसने 4 या 5 थिंकर्स इंडियन थिंकर्स को ही कवर किया है, तो they are more of a great leaders than thinkers, but they can fall in the same category. But in that case too, some reformers and administrators from India also need to be studied additionally, other than given in the book. I will share their names uh, next videos. And next, I have completed this topic: role of family and society and educational institutions. बहुत ही ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, अगर आप चाहें तो इसको बुक से आराम से क्लियर कर सकते हैं, बट अगेन आई विल से दैट substantiate it from the with some examples from internet or some other source, so that would be really good, क्योंकि एक होलिस्टिक एक वो तैयार कर देगा बेस आपके लिए to write some answers. And once you have completed all the topics, and then you should go and write some answers, and but that will be discussed later. So I think that was enough for today. And the topic that I have covered.
I think this much has been covered, and rest of these topics I'll cover. So tomorrow I will cover the topic of ethical concepts, Rithran, and concept of duty, concept of good and virtue. So see you tomorrow. Bye bye.